Hi guys, welcome to my channel. I am your host Dr. Rina Murmu Nilsson, and in this video I am going to talk about treatment for coronavirus. I'm making this video on 7th of April 2020. As of today, there's more than 1 million people that has been infected by the coronavirus. There's more than 70,000 people that have died from coronavirus. 2.5 weeks ago, when I looked into the data, there was only 8,778 cases of death from coronavirus. In 2.5 weeks, more than 50,000 people have died from this. Can you imagine that? Just think about the scope of this disease. It's so infectious and spreading so quickly. It has spread globally to almost all the territories and countries in the world. So it's very important to know whether there is a treatment to cure this dreadful disease or not. Unfortunately, as of yet, there is no treatment for coronaviruses. Because this virus has never been reported in humans before, it's novel, it's not been characterized, it's going to take time to develop vaccines or treatment. Okay, so that's the bad thing. The good thing, and this is my personal opinion about this virus, is that coronavirus belongs to a family of viruses such as SARS and MERS that are well known. So SARS is the virus that caused severe acute respiratory syndrome in 2002 in China, and MERS is the virus that caused Middle Eastern respiratory syndrome. Those viruses are well understood, and since coronavirus comes from the same family of virus, let's assume for a second that the drugs that were used to treat patients suffering from those disorders that I just mentioned before could work on coronaviral cases as well. So doctors globally are trying whatever they can to rescue or to save patients suffering from this dreadful disease. So in China, some doctors tried a drug called remdesivir. Now, it's really interesting because this drug, remdesivir, it was developed to treat Ebola, but it did not work on Ebola disease very well. But some scientific studies have reported that it can kill viruses such as SARS and MERS. And now, because coronavirus shares similarities with SARS and MERS, it became obvious to them that maybe this drug, which did not work for Ebola, could work for coronavirus and could work to kill the coronaviruses. So following this hypothesis, they tested it on a group of patients in China suffering from coronaviruses, and miraculously it worked. And this was also tested on one patient from the US who also seemed to have recovered after treatment with remdesivir. Now, following this very positive finding about this drug remdesivir, a clinical trial was initiated to figure out whether this drug actually treats coronavirus patients or not. Now, before any drug is brought into the market, it goes through these different phases of clinical trial. Clinical trial phase 1 through phase 5. So after this finding, 2 clinical trials, or actually 3 clinical trials, were initiated. The findings of these studies will be concluded in end of April or May. Let's see what they find out. We should be hopeful. I'm really hopeful. I'm looking forward to the result. I'm hoping that this is going to, treat this dreadful disease. Now, the second antiviral drug that has been used in some patients in China is called lopinavir, ritonavir. It's really complicated to pronounce these names. I hope I'm doing justice to the names. This has been used for patients with SARS, and now it's been used on 164 patients in Wuhan in China. I'm also excited to find out what the findings of that study is going to suggest. And now the third drug that is being used is also an antiviral drug, and it's called ribavirin, lopinavir, ritonavir. These drugs are currently being tested on patients. These studies will be concluded very soon, hopefully,
by the end of April or May, we'll find out whether these drugs actually work on patients suffering from coronavirus or not. Let's hope that it does. All right. And now there is this really interesting, I find it super interesting because some of the doctors have used a 70-year-old anti-malarial drug named chloroquine, and it has seemed to work on a group of patients suffering from coronavirus disease. And now there are many companies that are also involved in developing, the vaccines to treat coronavirus. Big companies like Pfizer, and there are many other companies. I can't name all of them, but recently I heard a really interesting thing, and there is a British American tobacco company that is claiming to develop a vaccine against coronavirus from a plant. They're saying that it's going to be available by June. Let's hope they succeed, and that this vaccine is made available to anyone who needs it. All right. Thank you so much for watching this video. Please do not forget to like, comment, share. Most importantly, if you want to support my work, if you like what I do, subscribe to my YouTube channel. See you real soon. Bye for now. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रीना मुर्मू निल्सन और इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई भी दवाई या टीका उपलब्ध नहीं है, ये बात आपको याद रखना होगा। ऑलराइट, लेकिन दुनिया भर के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए टीका विकसित करने में ज़ोर शोर से पड़े हुए हैं। और चूँकि कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ये जो एंटीवायरल ड्रग्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर। ऑलराइट, और कुछ दवाइयाँ ऐसे हैं जो एक्चुअली कोरोना वायरस पेशेंट को चंगा कर रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको उन दवाइयों के बारे में बताऊंगी। कोरोना वायरस एक नया वायरस है, ये पहले कभी भी मनुष्यों में नहीं पाया गया था। ओके, लेकिन ये वायरस उस वायरस फैमिली को बिलोंग करता है जिसमें सार्स और मेयर्स वायरस भी बिलोंग करते हैं। वायरसों का वर्गीकरण समानता के आधार पर डिफरेंट अलग अलग फैमिलीज में किया गया है, और ये जो सार्स और मेयर्स वायरस है, सार्स वायरस जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बना था, ये एक बीमारी या महामारी थी जो 2002 में चाइना में या चीन में पाया गया था। और उसके बाद ये मेयर्स वायरस है जो मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बना था। ये कोरोना वायरस इस फैमिली के वायरस को बिलोंग करता है, तो इनमें सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानता है। तो वैज्ञानिकों या डॉक्टर्स इनका मानना था कि अगर कोई दवाई इन वायरसों को मारने में सफल रहा है तो वो शायद कोरोना वायरस को मारने में भी सफल होगा, क्योंकि इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानता है। तो इस आधार पर चाइना में डॉक्टर्स ने कुछ एंटीवायरल दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने कोरोना वायरस पेशेंट्स पर, और इनका नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये वीडियो मैं 7 अप्रैल 2020 को बना रही हूँ, और आज के दिन 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 70,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत इस वायरस से हुई है, और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ऐसा एक ड्रग है जिसका नाम है रेमडेसिविर। अब ये जो ड्रग है ये एक्चुअली जो एबोला डिजीज़ आपने सुना होगा, एबोला डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया था। एबोला डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये दवाई उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा, तो उसे रोक दिया गया। अब चाइना में कुछ डॉक्टरों ने अपने पेशेंट्स को, कोरोना वायरस से सफ़र कर रहे पेशेंट्स को ये रेमडेसिविर दिया और वो ठीक हो गए। अमेरिका में भी एक पेशेंट को ये ड्रग दिया गया था और वो भी ठीक हो गया। तो इनका मानना था, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का मानना था कि हो सकता है कि ये ड्रग कोरोना वायरस पेशेंट्स पर काम कर जाए। तो इस आधार पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू किया गया। अब किसी भी ड्रग को या दवाई को मार्केट में आने से पहले ये क्लिनिकल ट्रायल्स के जो अलग अलग फेस होते हैं, चरण होते हैं, उसके थ्रू या द्वारा गुजरना पड़ता है। और ये जो ड्रग है रेमडेसिविर, ये फेज़ 3 या तीसरा फेज़ में है।
इस महीने के अंत में या अगले महीने हमें इस अध्ययन का परिणाम या रिजल्ट्स पता चलेगा। हमें और 2 भी एंटीवायरल ड्रग है जो डॉक्टर्स चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया और यूएस में भी अपने पेशेंट्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक का नाम है लोपिनोविर, रेटिनोविर, और ये जो दवाई है ये सार्स पेशेंट्स पर यूज़ किया गया था चाइना में, और कुछ हद तक ये पेशेंट्स चंगे भी हुए। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये वायरल ड्रग काम कर जाए। अब ये तीसरा जो एंटीवायरल ड्रग है उसका नाम है रिबाविरिन, ओके, और ये भी एक एंटीवायरल ड्रग है। कुछ डॉक्टर्स तो एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन को भी अपनी पेशेंट पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रग का इस्तेमाल मलेरिया को ट्रीट करने के लिए किया गया था। अब डॉक्टर्स चाइना में ही नहीं, पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएस में एंटी मलेरियल ड्रग अपने कोरोना वायरस पेशेंट्स को दे रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स चंगे भी हो रहे हैं ये ड्रग्स का इस्तेमाल कर। विशेषज्ञों का मानना है कि क्लोरोक्विन भी शायद कोरोना वायरस पेशेंट्स को ठीक करने में सफल हो जाए। ये सभी ड्रग्स जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इनका लिस्ट आपको यहाँ मिलेगा, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी वेबसाइट में दिया हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।